কালকে যে আপনার সঙ্গে প্রশ্ন হয়েছিল সেই প্রশ্নের পর ওর মধ্যে একটা দুইটা আর শব্দ আছে যে শব্দটা আর জিজ্ঞাসে তার মধ্যে एकटा अच्छे एक है वो बोलते हैं हिंदी में बोलने से अच्छा है एक है जिसको हम लोग बोलते हैं ओम विष्णुपाद तो कल हो गया ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भी हुआ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद ये भी हो गया उसके बाद में जो महाराज शब्द यूज़ करते हैं वो वैष्णवों के लिए महाराज शब्द क्यों व्यवहार किया जाता है? ना वैष्णव के लिए नहीं, ठीक है, सिर्फ सन्यासी के लिए। ठीक है, सन्यासी के लिए ही क्यों किया जाता है? किया जाता है इसीलिए सन्यासी और ये साधारण वैष्णव के अंदर में अंतर दिखाने के लिए ये चतुर्थाश्रमी ये विचार दिखाने के लिए महाराज माने हिंदी महाराज का मतलब लो जो श्रेष्ठ है उसलिए जगत का बीच में भी बोलते हैं महाराजा महाराज का मतलब साधारण मनुष्य के बीच में वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ इसलिए महाराज महान राज्य इसका बीच में वैष्णवों का बीच में ये चतुर्थाश्रमी ये इसको समझाने के लिए ऐसे ब्रह्मचारी को नहीं बोलते महाराज, लेकिन मूर्ख लोग ब्रह्मचारी को भी महाराज बोलते हैं। महाराज उसको ही बोलता है कि ये चतुर्थाश्रमी ये समझाने के लिए। कुछ ऐसा इसका अर्थ भी होता है कि वो लोग अपने स्नेह के द्वारा शासन के द्वारा उनके ऊपर राज्य करते हैं, उनके हृदयों के ऊपर राज करते हैं, इसलिए महाराज ना वो तो ये लोग जैसा भी सोचे कर सकता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार ये अलग करने के लिए ऐसा जैसे एक कपड़ा भी सन्यासी के लिए अलग पहनने का उसका किस लिए नहीं तो दक्षिण देश में ऐसा सभी पहनता है तो इसलिए इसको दिखाया ये इसका लिए ये जो ब्रह्मचारी ये सन्यासी कैसे समझा जाएगा। उसका है जो लाल कपड़ा जो पहनते हैं इसका नियम है ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ पर जो भक्त लोग कभी कभी गृहस्थ करके भी आते हैं तब उनको भी लाल कपड़े तो दिए ही जाते हैं। दिया जाता नहीं, लाल कपड़ा क्यों देगा, लेकिन गृहस्थ हो तो लाल कपड़ा ये तो सब आजकल पहन लेता है ना। गृहस्थ त्याग करके आया, हाँ गृहस्थ त्याग करके मतलब गृह त्याग करके गृहस्थ त्याग करके तो है नहीं, गृह त्याग करके आया, गृह त्याग करके आया उसको लाल कपड़ा देता है उसको तो वानप्रस्थी बन गया। वानप्रस्थी सफेद में भी रह सकता है वो लाल कपड़ा भी पहन सकता है। वानप्रस्थी लाल और सफेद दोनों पहन सकता है, ठीक है। सभी जेब में लाल पहनने की बात नहीं, सभी सफेद में रहेगा ऐसे बात। लेकिन आजकल तो इसका मर्यादा देता नहीं, पहले लाल कपड़ा वाला को अलग रहने पड़ता था, एक जगह में बैठता भी नहीं, ऐसे दिया है। इसलिए उसका कपड़ा से दूसरी लाल कपड़ा से ये सब दूसरी काम नहीं करती, वो कपड़ा का मर्यादा नष्ट हो जाएगा। जगमोहन प्रभु इसका ऐसा जरूरत है तो वो लेंगे नहीं, लाल से व्यर्थ कर। So yesterday we were hearing how what is the meaning of different words, Om, then Vishnupad, Ashtottar Shat, all these words we were hearing yesterday. Today the question came that why we address sannyasis as Maharaj. So the main thing Srila Maharaj is mentioning that to differentiate in between brahmacharis and sannyasis, those who have accepted the fourth order of ashram,
that is sannyas. So to differentiate them from all other varnas, they are known as Maharaja. And प्रभुपाद इसका बारे में लिखा है, सन्यासी का मतलब एक गुरु और ब्रह्मचारी का मतलब वो सेवक, उनका अनुभव में है। Srila Prabhupada has written in one of his Anubhashya, means in the commentary of Sri Chaitanya Charitamrita, he has mentioned that sannyasi accepting sannyas or becoming a sannyasi itself means becoming a guru. And then brahmachari means a sevak. Sannyasi means guru and brahmachari means sevak. This is also been mentioned by Srila Prabhupada. And then Srila Maharaj was mentioning that it's the fourth order. Now, like in the dress also changes. Brahmacharis, they are having different kind of dress, and then the sannyasis, they are having different kind of dress. Why? So that it becomes very easy for others to discriminate that who is sannyasi and who is brahmachari. In this way, because also जो ब्रह्मचारी जो है उसमें साधारण ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो है ये कभी उपकुर्बन नहीं करेगा। उपकुर्बन समझा जी? हाँ, इसलिए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये लाल पहनता है। So in brahmacharis also there are two kind of brahmacharis. One is called upkurvan, means that brahmachari who will never ever upkurvan. A brahmachari who is having no thought at all to enter into grihastha and who will never, who is not planning at all to enter into grihastha. So that brahmachari is known as upkurvan. And another word for them is nashtik brahmachari, means who is following or who wants to follow brahmacharya throughout his life. So they are known as nashtik brahmacharis. So for them red dress is being recommended. Red clothes, saffron clothes are recommended, not for others. Others are supposed to wear white dress. And then those who have come from, like can say somebody was in grihastha ashram, having wife, having kids, but then they have given it up and entered into the ashram, came to the temple, started staying in the mutt, then they are known as vanprasthis. Vanprasthi can also have white dress as well as red dress according to their intentions, their desires in their heart, which they will reveal to their guru, and according to that they will be wearing the dress white or saffron. So this is what Maharaj was mentioning, that earlier there was a big special, it was like special thing to have red clothes, and then special maryada, etiquettes was being followed, that okay, who is having red dress they will not do certain things, and then those who are having white dress they are supposed to do this and they are not supposed to do that. So all these things were earlier it was in practice, everybody used to follow, but nowadays so many things are mixed. It is very difficult, just by even seeing the dress when we can say that, oh, who is who. और ये भी है वो जो साधन ब्रह्मचारी वही हो सकता है, वो उससे गृहस्थ आश्रम में जाने में कोई दोष नहीं, लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर जाना ठीक नहीं। So those brahmacharis, those who are sadharan means those who have not accepted red clothes, or those who have their thoughts in their mind that they may not be able to stay upkurvan, means throughout their life they will be brahmacharis. If they उपकुर्बन मतलब जब लौट के आएगा, हाँ, वो बाकी सब है व्रत व्रती। ठीक है। So now Maharaj is saying that a brahmachari who will be following brahmacharya throughout his life, and from brahmacharya he will directly enter into sannyas ashram, he is known as brihad vrati, and the one who will be giving up his brahmacharya and entering into grihastha ashram, he is known as upkurvan.
earlier I was saying that Upkurvan means a person who is always following brahmacharya, never entering into sannyas, but that word was mistaken. So for them the word is Brihad Vrati, those who have taken a very great vow in their life that they will never ever enter into Grihastha ashram. So they are known as Brihad Vratis. Brihad means big and Vrati means vows. Those who have taken vow, Vrat, Brihad Vratis. बृहस्पति मैंने बृहस्पति जो भगवान उनका केंद्र करके सब कुछ करना And they इसलिए वो बृहस्पति Brihad Vrati means Bhagwan. So बृहत मतलब भगवान Brihad itself means a big thing, means Bhagwan. Brihad Vrati, those whose life is only centered for that personality who is Brihad, they are known as Brihad Vratis. And then Upkurvan, the others, they are having desire to enter into Grihastha ashram. So if from brahmacharya, if somebody enters, those who are not Naistik brahmacharis, if they want to enter into Grihastha ashram, that is not a problem. That is not like objected at all. But for those who are having Naistik brahmacharya, those who want to follow Naistik brahmacharya, those who are Brihad Vratis, for them to enter into Grihastha ashram is condemned, is not allowed, is not like no, it is not proper. It is not proper to enter into Grihastha ashram for them. गोस्वामी शब्द जो यूज़ करते हैं फिर भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, जो उसमें गोस्वामी शब्द यूज़ करते हैं उसका क्या अर्थ होता है फिर? गोस्वामी मतलब जो स्वरवेग को जय किया, जो रूप गोस्वामी पाद जी पहले श्लोक में बता रहे हैं, हाँ वही तो गोस्वामी। तो उसका वही है, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरम उपस्थ वेगम इतान वेगन जो विषय तो धीरो सर्वमपि मम पृथ्वी सात। यह है स्वरवेग जोई, यह है गोस्वामी। नहीं तो इसका गोदास ना, गोदास तो शास्त्रीय भाषा, इसका लोग व्यंग करके वो जो एक गोसाई था वही वहाँ का, वो जो वृंदावन का, वो बैंक में नौकरी करता था। तो बोलता है हम लोग जो गोस्वामी है, एक गोस्वामी मैंने गोरू, उनका स्वामी मतलब सांड। ऐसा व्यंग, क्योंकि स्वरवेग को जय किया नहीं, जो स्वरवेग जय किया वो गोस्वामी। तो उसका हम लोग उसी को लगाता है जो इस स्वरवेग को जय किया। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरम उपस्थ वेगम हितान वेगन जो विषय धीर सर्वमपि मम पृथ्वी सात। सबको शिष्य करने का अधिकारी, इसीलिए जो शिष्य करते गोस्वामी बोलते हैं, और शिष्य ना करने से भी जो इसको जय किया वो गोस्वामी है। ठीक, अगर जय ना करे वो लिखने से ही गोस्वामी होता नहीं। डॉक्टरी पढ़ने से, डॉक्टरी पढ़ के डिग्री के तो लिया, वो करके प्रैक्टिस करेगा तभी होगा डॉक्टर। So now the meaning of Goswami, I think most of us we know this first verse of Upadeshamrit, Vacha Vegam Mansa Krodha Vegam. So Maharaj is mentioning that those who have controlled all these 6 urges, they are known as Goswamis. Otherwise they are not Goswamis. They are considered Godas, means the servant of their own senses. Or Maharaj was mentioning that one Gosai from Vrindavan, he used to mention that because he maybe has taken birth in the family of Goswamis, but he was working in a bank, and then he used to mention that, oh, even though our surname is also Goswami, but in reality we are not Goswami. Those Goswamis which are like Shad Goswamis or all this, no, we are not that kind of Goswami. We are also Goswami, means
we are Goswami means the husbands of cows. The meaning is husband of cows means bull, and bull means we are that kind of Goswamis who are always freely enjoying their senses here and there without any shyness. So we are that kind of Goswamis. So Srila Maharaj was mentioning that just by but in reality, who are Goswamis? Those who have controlled their all senses. That's why they are also known as gurus. If even if they make disciple or not, they are gurus. At the same time, if they make disciple, for their disciples they are guru because they have controlled their senses. As well as if they have not they don't make disciple, but still they are Goswamis also. Why? Because through their conduct, through their teachings, they can they can rule the heart of so many people. So that's why they are known as Goswamis. Just by having this word only, or if somebody like so many disciples, ignorant disciples, they are using for their guru this word Goswami, if their guru is their guru have not controlled their senses, then this word itself is also having no meaning. According to the language of Prabhupada, that is prostitution of word. Srila Prabhupada used to mention for so many different words that it's prostitution of words. So for those who are not on that platform, but still if this word is used for them, so that is prostitution of words, nothing else. Like Maharaj used to mention earlier, the word Sahajiya. When Srila Prabhupada he met with some devotees, then he mentioned that this word Sahajiya is a very natural, wonderful word. This is used for real Brajvasis like Nand Baba, Yashoda Maiya, and Sakhas, and Srimati Radhika, and Swarup Damodar Goswami. All these devotees who never seen Vrindavan, who physically never visited Vrindavan, never gone over there, but still Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted him as our natural Brajvasi. So Shuddha Brajvasi, pure Brajvasi. So Sahaj word itself means those who are having natural inclination for the service of Krishna. Sahaj means natural. And वो जो भी कृष्ण का नित्य दास है, उसी में जो प्रतिष्ठित है. So the real nature of the jiva is that he is the eternal servant of the Lord. So if those who are having this, those who are established in this truth, they are known as Sahajiyas. This is the real meaning of word Sahajiya. But in this material world, most of the people, those who are not on that platform at all, but externally they try to pretend and act in such a way that they are Krishna or they are gopis or something like that. So the word is used for them nowadays that oh, they are Sahajiya. Like if somebody calls a pure devotee, oh you are Sahajiya, then everybody feels like why they are calling me Sahajiya. But in reality this word is very good. But like nowadays it is being used as prostitution of words. So Srila Prabhupada Maharaj mentions that he was having a great desire to present a dictionary. The name of that dictionary was Vaishnav Manjusha, means that dictionary in which Srila Prabhupada wanted that all the words should be given the meaning, natural meaning of those words, not that prostitution of words. He wanted that and he presented 4 different volumes, small volumes of that book, even though he wanted so many other things, but he did not complete it. At one place in Saraswati Jayashree, he is mentioning that if I have to take birth again and again and again to complete this task, I will come again and again and complete this task of completing Vaishnav Manjusha. Manjusha means the dictionary in which the meaning of the word will be given according to Vaishnav literature. ना ना मंजूषा का मतलब क्या? मंजूषा का अर्थ पेटी. हाँ. Manjusha means like we have this prem samput. Samput means treasure chest. So in the same way Manjusha also is having treasure chest. Vaishnav Manjusha. The word for Sahaja that we use, it's actually Prakrita Sahaja. Yes, that's why this word was being created by Srila Prabhupada. Prakrit Sahaja. Prakrit word itself, it's not there in any dictionary.
But Srila Prabhupada, to differentiate in between real Sahajiyas and the like nowadays Sahajiyas, he used Prakrit Sahajiya. And for devotees, he said we are Aprakrit Sahajiyas. When they were calling Gurudev Sahaja, one time Gurudev said actually this is glorification because Yes. he said the meaning is that. Yes, real meaning. तो रविन्द्रनाथ बोला ये तो नया शब्द सुना, मैं कोई डिक्शनरी में देखा नहीं, तब प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन किया। इसी कारण से Srila Prabhupada visited Rabindranath Thakur, means Rabindranath Tagore, and Rabindranath Tagore ना उसका भाई विदेश में गया था। ना रविन्द्रनाथ गया था। Rabindranath Tagore visited in the western countries. He preached his message, whatever his message was. Then Srila Prabhupada, prior to sending somebody to the western countries, he visited him because they were like having family friends. Srila Bhaktivinoda Thakur knew them. Rabindranath Tagore's brother was his brother was studying with Srila Bhaktivinoda Thakur. So they were friends. Srila Prabhupada knew them. So Srila Prabhupada visited and inquired from him that, where we can send our preachers and what should be, like preparation should be made, this and that. He mentioned that, I think it is not proper to send anybody at this time. Why? Because in the western world the message of Vedic culture will not be accepted. Why? So many people has already visited and they spoiled the mission. They have preached so many bogus things over there. So it is not proper to go at this time. So Srila Prabhupada started speaking with him, and in meanwhile सब स्पीकिंग नहीं, उनका थोड़ा इसका विषय में लेक्चर दिया, Hari Katha suna. हरि कथा सुना। So Srila Prabhupada spoke some Hari Katha in front of him, and then by hearing that for a short while, he mentioned that, if you go, you will definitely be successful and you will conquer the whole world. Then Srila Prabhupada mentioned, because he used this word Prakrit Sahajiya over there first time, and then this Rabindranath Tagore, he mentioned that, I never heard this name at all. This word. I never seen any dictionary. In any dictionary, I never saw this word even, Prakrit Sahajiya. So Srila Prabhupada explained that word over there, what is the real meaning. So at that time he remarked that, if you can go, then you will be successful. Then Srila Prabhupada mentioned, yes, even if I will not go, but I will send somebody like me. Successful. Then Srila Prabhupada sent different devotees over there, and then there was a success. और रविन्द्रनाथ ठाकुर नोबेल प्राइज मिला था वो लेखनी से, गीतांजलि लेखनी से, इसलिए गया तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया, उससे भी हुआ। Rabindranath Thakur, he got Nobel Prize because he wrote one book by the name of Gitanjali, and it was been translated and he got Nobel Prize. वो कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं? इसको गोसाई तो सुनाया। मैं सुन रहा हूँ। आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुँच रही है बिल्कुल भी, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। जो लोग निताई गौर राधे श्याम इत्यादि का कीर्तन करते हैं, अखंड कीर्तन करते हैं, 24 घंटे कीर्तन करते हैं, उन लोगों के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करना या फिर कोई आदान प्रदान करना, ये उचित या अनुचित? निष्ठा रहने से ना करना ठीक है। यदि एक व्यक्ति की अपने गुरु वर्गों के प्रति निष्ठा है, महामंत्र जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है उसके प्रति निष्ठा है, तब वो वहाँ पर कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। रागलेखा दीदी वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। वहाँ पर उनके यहाँ पर जो ठाकुर जी इत्यादि होते हैं उनके लिए कुछ देना करना, आदान प्रदान, ना वो तो वहाँ जाके प्रणामी देना। किसी विशेष स्थान का जैसे होता है, मान लीजिए हरिदास ठाकुर जी की समाधि है, या फिर सिद्ध बकुल है और गंभीरा मंदिर है, तो उन स्थानों पर हम लोगों को जो सेवा करने की अभिलाषा है वो करेंगे,
किंतु उनका प्रसाद इत्यादि ग्रहण नहीं करना ही अच्छा। अच्छा। So the question she asked that there are places, so many places like Shilharidas Thakur Samadhi, Siddha Bakul or Gambhira temple, so many places they don't chant Hare Krishna Mahamantra, which is being shown by Sri Chaitanya Mahaprabhu and followed by his real followers, but they chant Nitai Gaur Radhe Shyam or other mantras. So we can have any relationship in meaning is that like exchanging some prasadam, taking some prasadam from them or not. Then Srila Maharaj started mentioning that it depends on one's nishtha. If we are having nishtha for our Guru Vargas on their words, then we will not take prasadam from them, we will not accept anything from them. Then she asked further that can we do some seva over there or not, like giving some donations or bringing some ingredients for the Lord or whatsoever. Then Srila Maharaj mentioned that because those places are very special places for us, if we want to do something, we can do, but we should not accept prasadam. That is proper, but still depends on one's own nishtha. Decide yourself. स्वामी विवेकानंद जो हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो में किया है वो वेद के ऊपर किया है, ठीक है। उसके साथ तो वैदिक जो मूल जो ये है इसका साथ नो कॉन्ट्रडिक्शन। क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद वो तो मेरे को पता चल गया कि स्वामी विवेकानंद ने जो बोला है वेद से बोला है। वेद के ऊपर ही तो किया है टोटल, उसके साथ वैदिक जो मूल मंत्र है उसका साथ कोई उसको ही रिलेटेड टोटली। कोई मेरे को क्वेश्चन क्लियर, आपको क्वेश्चन क्लियर है उनका? वैदिक मंत्र स्वामी विवेकानंद ने दिया है तो फिर वो वेद की तो बात है, फिर हमको हमने उनको कुछ किया नहीं अभी तो कंडेम नहीं किया, कोई बात नहीं किया, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि क्या वो सचमुच में वेद के ऊपर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? वो तो वेद के ऊपर ही बोला, टोटली वैदिक हिंदू धर्म वैदिक इसके ऊपर ही डिस्कस किया है शिकागो में। हाँ, तो सनातन जो हिंदू धर्म है हाँ उसके साथ हाईली रिलेटेड, टोटली रिलेटेड। क्या बोलते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ पहले तो कि क्या कह रहे हैं। टोटली रिलेटेड नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? वैष्णव जो धर्म है वो तो वेद के ऊपर ही होता है, टोटल वैदिक मंत्र के ऊपर। आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात को, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए। वैदिक मंत्र जो है वो ये जो ब्रह्मचर्य सभी वैदिक मंत्र के ऊपर ही होता है, टोटली वेद के ऊपर ही बेसिक। मेरे को नहीं समझ आ रहा कि वो कुछ बता रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? विवेकानंद जी भी वेदों पे करते, वैष्णव धर्म वेद एक आगे क्वेश्चन नहीं बोला है जो वैदिक जो मंत्र है उनका प्रश्न कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं उनसे बाद में बात करता हूँ, पहले ठीक से मैं समझ के फिर महाराज जी से बात करूँगा। ओके। Maharaj was giving the definition of what is to criticize. He said, like speaking the truth about somebody with a bad intention in Faridabad. Okay. So we should not criticize, also not praise. What is the definition of to praise and why we should not praise? बकुला दीदी प्रश्न पूछ रही हैं कि भागवत में एक श्लोक है जिसमें बोला गया है कि ना प्रशंसित ना निंदित, ना निंदित ना प्रशंसित ना गर्हित, ठीक है। पर स्वभाव कर्माणि ना प्रशंसित ना गर्हित, तो ना प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही निंदा करनी चाहिए। तो उसमें निंदा किसको बोलते हैं ये भी देखना, तो वो वही बता रहे हैं कि आपने फरीदाबाद में उसके ऊपर बोला था कि निंदा करने का अर्थ होता है कि व्यर्थ में, जी, अयथार्थ भाषण, व्यर्थ में किसी के विषय में चर्चा करना या उनके विषय में गलत बोलना, तो ये हो गया निंदा के अंतर्गत। और उसमें फिर सच बोले वो निंदा नहीं, अगर वो सच बोलता है वो निंदा नहीं है। और उसमें फिर आपने बोला था कि पर विधि बलवान, और यदि कभी प्रशंसा करनी पड़े तो करनी चाहिए थोड़ी बहुत, हाँ थोड़ी बहुत, किंतु निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अभी वो बोल रही हैं कि वहाँ पर प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, वास्तविक रूप में इसका अर्थ क्या है?
कि प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए किसी की? प्रशंसा करोगे तो आप उसमें चला जाओगे, आपको दिल वहाँ जाएगा जिसको तारीफ करोगे, और निंदा करो तो व्यतिरिक्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। एक बादशाह था, वो अपना वजीर को बोला कि हमारा बीमार को 3 दिन में वो ठीक करने पड़ेगा, अगर ना ठीक कर सको तुमको फांसी में लटकाऊंगा। वो देखा कि इसका जो बीमार है ये ब्लड प्रेशर है, ये हट जाएगा, कोई ट्रीटमेंट है अभी तक जो हट जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा ही है, इसको फांसी में चढ़ाएगा। वो बड़ा दुखी हुआ। तो उनका पत्नी ने बोली, तुम्हारा दुख किस बात की, आराम से स्नान करो, भोजन करो, मैं दवा बना दी। तो उन्होंने उसको ये किया, स्नान तो किया, बोला आराम कर लो, आराम तो होता नहीं, भय है। तो उन्होंने क्या किया, वो मिट्टी का साथ इमली मिला के वो गोली बनाया, गोली बना के बाजार से सोने का वो डिब्बा मंगाया, और वो सोने का जो डिब्बा है उसके अंदर में वेलवेट कपड़ा दे करके वो उसमें दे दिया, 4 गोली दे दी। देने का बाद वो क्या करते हैं, उसको बोला जाओ, भयभीत नहीं होना, निडर होके जाओ। पहले तो बताया दवाई तो तैयारी है नहीं घर में, बनाने के लिए 10,000 रुपया चाहिए, ये दुर्लभ दवाई है। तो ये बना के वो लेके गया, वो मिट्टी और इमली मिला के गोली बना के दे दिया। लेकिन उनको शर्त तो है, इसका एक ठीक अनुपान लेने पड़ेगा। अनुपान क्या है, ये जो लोगे ऊँट का याद नहीं करना, अगर ऊँट का याद करोगे तो गोली अंदर जान बाहर। अभी उसको दे दिया, जो भी लेने जाता है वो कोई वही बात याद होता है, कभी ओस का याद होता है, कभी उनका जो प्रधान बेगम है वो कहती है आपको ऊँट का बात याद नहीं है, तो बस तुम तो याद करा दिया। ऐसा जब जाता है ऐसे ही होता है, नहीं ये कर सकेगा, इसका बोलता है बेटी देख बाबा देख अंदर, ये है ऐसा एक है। प्रैक्टिकल मैंने देखा, जब मैं पढ़ता था तो उसमें एक आदमी, बहुत बड़ा एक तालाब था, कोई 3 मील लंबा है, उसमें खूब कमल का फूल होता था, और जिस रोज संडे होता उस वक्त हम लोग जाता था, किसी का कमल का फूल उठा के लाते। उस वक्त देखा कि एक आदमी वहाँ गिर के मर गया, खूब पिया था तो उठ नहीं सका, वहाँ मर के ऐसा मोटा हो गया और मक्खी भर गया। उसका उस वक्त वो जो है गांव में चौकीदार था, उसका ऊपर एक दफादार, वो खबर गया, दफादार आया तो गया थाना में खबर देने का, और ये चौकीदार यहाँ पहरा देने लगा। तो इतना बड़ा सिर भी इतना बड़ा हो गया, हम लोग वहाँ देखने के लिए गया। देखने का बाद रात को जब सोने का टाइम होता है, लाइट बंद करने से उनका दिखता, तो क्या करे, वो लाइट जला के मैं पढ़ता था। लेकिन उस वक्त सुपरिटेंडेंट आया, लाइट क्यों जलता है, तो बंद कर दिया। लेकिन थोड़ा बाद फिर जलाया, और देखता हूँ उसको, ऐसा 3 वक्त हुआ। फिर टाइल्स उस वक्त जो बोलने के लिए आता था, तो मैंने बोला देखिए
ये सच बात यही है, जब भी वो लाइट बंद करता हूँ तब उसको देखता हूँ। उसका नाम था सनातन, उसी को देखता हूँ। और ट्राइबल था, उन्होंने बोला मैं भी देखता हूँ। ये दोनों वो हमारा वहाँ बैठा चेयर में रात भर मैथमेटिक्स किया। ऐसा 3 रोज तक था। तो ये कैसे आया? इसलिए है कब जाता उधर? भयात, भय से, क्रोधात, क्रोध से, ये सब उधर जाएगा। एक 2 किस्म से, एक अन्वय, एक व्यतिरिक्त। ये जो प्रशंसा करे ये अन्वय रूप से, और जो निंदा करे ये व्यतिरिक्त। ये दोनों ही नहीं करना। और निंदा करते रहोगे तो बार बार इसका नाम याद होगा, और तारीफ करते रहो बार बार रहेगा। तो अभी आप बोल रहे हैं कि प्रशंसा कभी कभी तब भी थोड़ी बहुत की जा सकती हाँ, है, लेकिन निंदा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ना। ठीक है। अभी जो प्रशंसा करने वाली बात है, हाँ। ये जो श्लोक है वो साधारण लोगों के ऊपर लागू होगा, ना कि सबके ऊपर? जैसे सबका ऊपर। हम अपने गुरु वर्गों की प्रशंसा करना, उनका गुणगान गाना सब समय के लिए। गुरु प्रशंसा थोड़ी करता है। उसको गुरु वर्ग का प्रशंसा करने के क्या अधिकार है? ठीक है, उसको उसके लिए शब्द कौन सा व्यवहार करते हैं? महिमा कीर्तन। महिमा कीर्तन। हाँ। तो इसलिए महिमा कीर्तन अलग हो गया। हाँ। और प्रशंसा होता है जो कि साधारण लोगों के लिए। साधारण लोग इसीलिए उनका प्रशंसा करते तो मैं बड़ा हूँ, उनको तारीफ किया। जैसे अच्छा, वो ठीक देता है, वो बोलता है ना, वो पुरस्कार देता है। हाँ जी। तो पुरस्कार देता है क्या? पुरस्कार देने वाला बड़ा व्यक्ति, हाँ, और लेने वाला जो है वो छोटा। छोटा। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रशंसा केवल जो है वो अपने से छोटों की जाती है, बड़ों की नहीं। ठीक है। बड़ों का जो होता है वो महिमा कीर्तन शब्द आता है। ठीक है। वैष्णवों की प्रशंसा की जा सकती ना, वहाँ प्रशंसा वही शब्द बोल ही नहीं रहे ना, फिर कह रहे हैं वही तो महिमा हो गया। अच्छा, दूसरी बात, और जो बोलता था ये वेद का ऊपर बोलते हैं। वेद के ऊपर बोलने से ही ठीक हो गया। भागवत पहले भागवत में एक श्लोक है, गंगा जी का किनार पर इमली का पेड़ है और नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। तो ये सब गंगा का पानी पीता है, गंगा का मिट्टी का ऊपर रहते हैं। तो ये सब रहने से भी सब स्वभाव में अलग अलग फल देता है। क्यों? इमली क्या देता है? खट्टा। खट्टा फल देता है, लेकिन वो ज़्यादा खट्टा दूसरी जगह से। जो नीम है वो ज़्यादा कड़वा दूसरी जगह नीम से। जो अमरूद है ये दूसरी जगह से ये बढ़िया अमरूद है। तो ये स्वभाव क्यों ऐसा हुआ? इसी में भी जो लोग शरणागत नहीं होकर वेद पढ़ता है वो अपना बात उसमें आता है, उनकी बोलता है। अब वही ये तो बोल दिया उदाहरण भागवत का एग्जाम्पल। दूसरी है जैमिनी, ये वेद पढ़ा कि नहीं? वेद के ऊपर ही तो बोला। सारे के सारे षड दर्शन सारे उसी में से अपना अपना वो अच्छा, निकालते हैं। चार बाग तो वेद पढ़ के ही नास्तिक बना। चार बाग क्या बोला? खाओ पियो मौज करो, रीनं कृत्वा घृतं पवित, जावत जीव सुखं जीवित, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतो। ऐसा बोल दिया। कौन खा के ये हुआ? अभी तो ऐसा वैशेषिक नहीं। गौतम सारे के सारे सारे के षड सारे। दर्शन का एक साथ में हाँ। बस, और ज्यादा नहीं बोलना। एक नहीं घंटा बोलना, हो गया। मैं वहीं बोलता हूँ। तो ये लोग तो वेद को अवलंबन किया, तो वेद अवलंबन करने से वो हो गया। ठीक है, नहीं ठीक। समझा।
So I think everybody understood the question of Charu Chandrika, Bakula Didi, that she was asking a question. That Srila Maharaj, he was mentioning one verse in Faridabad, that par karmani पर स्वभाव पर स्वभाव कर्माणि कर्मणि ना प्रशंसेत ना गर्हयेत. पर स्वभाव means स्वभाव means the nature of others. पर स्वभाव कर्मणि and their activities. पर स्वभाव कर्मणि ना प्रशंसेत. One should not glorify, one should not speak about it, and na garhet, and one should not even criticize it. So criticism, na garhet, means one should not criticize. What does it mean? That what is untruth should not be spoken. What is truth is not come, it doesn't come under the category of garhet, criticism. It does not fall in that category. So na prashanshet means one should not even glorify. Even though Srila Maharaj mentioned, according to Chaitanya Charitamrita, Srila Kaviraj Goswami mentions that par vidhi balavan means if two things are being mentioned, first is mentioned na prashanshet means one should not glorify, and then secondly it is mentioned one should not criticize. Though par vidhi balavan means second thing should not be done at all. First thing, if required, something can be done, but second one is completely prohibited, that one should not do it at all. So one should not criticize anybody at all. Prashansha, glorification can be done. So then Srila Maharaj was mentioning that why it is like that, because Bakula Didi asked the question that why one should not even speak good about others. Then Srila Maharaj was mentioning that even if you speak good about somebody or even if you speak bad about somebody, what happens that your heart goes over there. So Maharaj gave two examples. One example, he was speaking about that one king, he became sick and he was having high blood pressure. He called one Vaidya. Not called, his family Vaidya was there. So he asked him that you have to prepare medicine for me and I want that I should get cure in 3 days itself. If I will not get cure in 3 days, then I will cut your head. So this Ayurvedic doctor, Vaidya was too much worried. He came to his house unable to sit, unable to think anything, and he was like completely disturbed, disappointed that what should be done. His wife saw him, understood everything. Then she mentioned to him, don't worry at all, just take rest, go and take bath first, eat something, take rest, I am going to prepare medicine, don't worry at all. Then you are not fear also, don't be threatened at all. So at that time what he did, that even though he took bath, he came to eat something, but his mind is completely restless, he is doing something like machine. So his wife, she said that, first send the message to the king that we need 10,000 rupees for that medicine. That is too costly. It's not so easy to prepare that medicine. No, it is not prepared before, because এটার আয়ুটা হলো অল্প, খারাপ হয়ে যাবে, সেই জন্য যখন হয় তখন করতে হয়। So you have to give money immediately, so that we can prepare and then you can take, because if we keep this medicine for long time it will spoil. So costly, it's too costly. So they got 10,000 rupees, and then what she did, that she took some tamarind and then not his wife, she took some tamarind and then added it with earth, and then she made some pills out of it, small balls, and then she asked her husband, she made 4, and then asked her husband to bring one small, not husband, servant, bring one. ठीक है ये तो भय पेয়ে যাবে, এই তো বলছে না কিছু, তুমি আরাম করো, স্বামীটাকে বলছে আরাম করো, मैं सब व्यवस्था कर। ठीक है,
So some or other she sent one servant. He brought one small container made up of gold, and then she covered it. She kept one velvet cloth inside, kept these 4 pills inside. When her husband woke up, then she said, "Oh, take these pills and give to the king with one condition." What is the condition? That tell him that the time when you have to take this medicine, you must not remember camel at all. If you will remember the camel, the time when you are taking this pill, then what will happen? The pill will go inside and your life will go out. So 100% careful, don't remember the camel at all. So now whenever this king he wants to take the pill, what happens? That camel automatically manifests in the heart, in his mind. And one time he was about to take the pill, his queen came, the special queen. She came and then she mentioned that, "Oh, you are sure that you don't remember camel at all?" Then he said that, "Well, I had no remembrance of camel, but you made me remember the camel." So in this way Maharaj is mentioning that indirectly, this is called that mind indirectly goes over there. Camel is not there, nothing is there, but this thing is been given in the mind. So this is not directly but indirectly, this has been forced that he should always remember the camel. So then second thing Maharaj mentioned about himself, that when he was young, at that time they used to go to one pond and take bath over there, and there used to be so many lotus flowers, so many other things he was mentioning. So one time they saw that one dead body was there, and then tribal person was died, and he was in the water for a long time. His body swollen up, head became very big also, and then some or other Maharaj saw that dead body, and police were informed or whatsoever in the village. Then finally what happened, that on the time whenever he is used to going to sleep, then what happens, that as soon as he switch off his light, he sees that person, and then again he turns on the light, again everything is all right, he studies more, but then again what happens, that as soon as he switch off the light, he sees the same person. One superintendent came and he mentioned that, "Why your light is on?" Then he again switch off. 3 times, 4 times it happened, and then finally he mentioned that actually what is the truth is that as soon as I switch off the light, I see that person whose name was Sanatan. So I see that person, and then the superintendent also mentioned that I also see him as soon as the light is off. So Maharaj is saying that how come that person is coming in my mind, coming as soon as the light is off. This is like indirectly imposing that, oh, he is there, this is coming in the mind. So there are things which directly comes, there are things which indirectly comes. So if you are criticizing somebody, then what happens, that his bad qualities always manifest in your heart and force you to go to that side. And if you are glorifying somebody who is not having all good qualities but some good qualities, if you are glorifying that person, then what happens, that again his good qualities are also not good for you. So that's why one should not glorify. Then I questioned in between that for the Vaishnavas, for our Guru Vargas, it is always mentioned that we should always glorify them. Then Maharaj mentioned that there are 2 different words in Sanskrit, Prashansha and another is Mahima. Mahima and Prashansha, I am not sure English words what how to put into words, but Mahima means real glories, praises, real glories, and praises मेरे को लगता है प्रशंसा वाला होगा उल्टा. प्रशंसा मीन्स प्रेजेस, ना प्रदेश ना, गुरु वर्गों के लिए तो ग्लोरिफिकेशन हो गया और साधारण लोगों के लिए प्रेजेस. So for ordinary people the word is been used praises. So one should not praise. The meaning over there means one should not praise anybody. Means, just 1 second. So for ordinary people the word is been used praised, and for Vaishnavas or for our Guru Vargas we use the word glorification. Mahima is glorification and Prashansha means praise. So the word in that verse is been used Prashanshet, means one should not praise. So one should not praise means
it's not mentioned about Vaishnavas or Guru Vargas. It is just mentioned about the ordinary people of this world, general people. So then Maharaj was mentioning that who can actually praise? A person who praises, he is superior, and the person who is being praised, he is junior. So for us, our Guru Vargas, they are superior to us. So we cannot praise them, we can only glorify them. So in that verse, it is spoken about ordinary people's praises or criticism. That should not be done. That is what Maharaj was mentioning. And after that he was mentioning about the six philosophies, six philosophers, Jaimini, Kanad and others. Everybody, they are proving their philosophies, their thoughts from the Vedas itself. He was mentioning one example from the Bhagavatam, that in the Bhagavatam it is been mentioned that can say like on the bank of a Ganga there is mango tree, there is tamarind tree, there is bitter gourd, Karela tree or any other, guava tree, not called the name. neem is there. Okay, neem or anything like that. So what if it is there on the bank of Ganga, mango, drinking the same water, earth is also same on the bank of Ganga, but still the fruit and the taste is completely different from each other. Why it is like that? It is not that because they are on the same bank, so they will be giving the same fruit or the taste of the fruit will be same. It is not like that. And Jaimini, Kanad, whatever they spoke, they also spoke from the Vedas. They also proved their philosophy from the Vedas. But still, there is a gulf of difference in between their opinions. So in the same way, we cannot say that Swami Vivekananda, even if he has spoken from Vedas, but his conviction or his point of view, his vision and the vision of Gaudiya Vaishnava Acharyas or the vision of any other philosophers are same. Vision of them is completely different from each other, and there is superiority and inferiority in their opinions. This is what he was speaking about. I think it's too long today. We'll stop here. Tomorrow we will ask anything.